हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड मेरे इंटरसेप्टर के लिए। पहले हम उसे अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बॉक्स है जो मुझे कार्बन रेसिंग से बाय कुरियर डिलीवर हुआ। आई टेल यू, पैकिंग इज़ वेरी गुड। और जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इंटरसेप्टर क्लियर, मैंने क्लियर वाइजर ऑर्डर किया था। और राइट नाउ दे आर शिपिंग यूजिंग इंडियन पोस्ट। So this is the windshield and accessory। आप देख सकते हैं क्लियर वाइजर है और उसे लगाने के लिए जो भी एक्सेसरीज रिक्वायर्ड है वो भी प्रोवाइड किए गए। लेट्स ओपन इट। एक्सेसरीज में हमें ये 2 सपोर्ट रॉड मिली है। आप सुन सकते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल एंड दिस इज अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक। सो दीज आर द 2 बकल्स। ये दोनों बकल को हमें हमारा हैंडल बार में लगाना होगा। लेट्स पुट इट असाइड। और थोड़ी एक्सेसरीज है। एंड लास्टली देयर आर सम नट एंड बोल्ट्स। सो द बिल्ड क्वालिटी ऑफ नट बोल्ट्स आर प्रीटी डिसेंट। These are also made up of metal. So let's get started. So first, let's check out the windshield. So this is the one windshield. So let's start the assembly.
All right, so finally we can add them here. Alright, so this setup is ready. क्लैंप को कभी साइड अंदर की तरफ रखा है, आप देख सकते हो, और लूज छोड़ा है ताकि जब ये पूरी तरह से ताकि कोई भी जो है तो उसे सेट कर सके। तो इसे हमने पूरी तरह से टाइट नहीं किया है, इसे हमने पूरी तरह से टाइट कर दिया है। जैसे ही ये फिट हो जाएगा हम इसे भी सेट कर देंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द बाइक। सो बाइक में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें बाइक के ये दो हेडलैम्प के स्क्रूज़ को लूज़ करना होगा और यहीं इसे फिट करना होगा। बाइक के साथ प्रोवाइड किया गया 12 नंबर का फाना बहुत है, लिटिल टाइट बट यू कैन डू इट। पहले हम एक साइड का रिमूव करके वहाँ पर स्क्रू को सेट करेंगे। एक साइड को थोड़ा सा कसने के बाद में विल रिमूव द अदर स्क्रू। Separated back. दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। पूरा ध्यान रखिए, पूरा टाइट नहीं करना। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप साइड। नाउ I have already installed a cigarette lighter charger, and I think I need to remove it and place it somewhere else because it is coming between, क्योंकि वो बीच में आ रहा है। so देखते हैं। First let's get it done. I think it is best place to put it. Let's put on the second one.
Finally, the assembly is done. You can see the complete overlook. See from the front. एक प्रॉब्लम आ गई है, बस ये जो चार्जर है इसे लगाने के लिए कुछ जुगाड़ देखना होगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन. इट्स वेरी स्टडी. फ्रंट लुक देखिए. बाइक के लुक को इसने बहुत ही निखार दिया है. लेट्स टेक इट आउट फॉर अ स्पिन एंड चेक इट. चलिए इसे लेकर चलते हैं और देखते हैं.
as expected, although I am getting some air on my face. जब इसे थोड़ी सी भी हाई स्पीड पे चलाते हैं तो जो विंड पहले जो चेस्ट पर आ रही थी अब वो विंड फेस पर महसूस होती है, बट इट इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट. वेरी सून आई विल बी डूइंग अ राइड. दैट टाइम आई विल बी टेस्टिंग द windscreen thoroughly. Please like and subscribe my channel guys. Thanks for watching. See you soon in the next vlog.